जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एक इंटर स्टेट और ट्रांसनेशनल टेरर मॉड्यूल तोड़ दिया है जो पाकिस्तान बेस्ड बैन ग्रुप्स जैश ए मोहम्मद और अंसर गज़वात उल हिंद से लिंक्ड था, जो अल-कायदा एफिलिएट ग्रुप है। पुलिस ने 2900 केजी बॉम्ब मेकिंग मटेरियल रिकवर किया, जिसमें 350 केजी अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर्स, असॉल्ट राइफल्स, हैंडगन्स और एम्यूनेशन शामिल है। यह सब फरीदाबाद के अल फलाह हॉस्पिटल के डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर और अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आदिल अहमद राके लॉकर से मिला। In a major counter-terror operation, Jammu and Kashmir police with Haryana and Uttar Pradesh agencies have busted an interstate and transnational module linked to Jaish-e-Mohammed and Ansar Ghazwat ul Hind. The network, involving radicalized professionals including doctors, spans several states. Authorities seized 2,900 kilograms of explosives and IED making materials during coordinated raids. The breakthrough followed an ongoing investigation launched last month after posters bearing threats from Jaish-e-Mohammed surfaced in Srinagar's Naugam area. Acting on intelligence from arrested suspects, police teams traced key operatives to Faridabad and Saharanpur, where multiple houses rented by the accused were raided over the past week. In Faridabad, officers recovered around 360 kilograms of explosives, an AK-47 rifle and ammunition from a rented house in Dauj village. The house was occupied by Dr. Muzammil Shakil, a 35-year-old physician from Pulwama who taught at Al Falah Medical College. Investigators say he's among several highly educated operatives believed to have been coordinating logistics and supplies for the terror network. A day later, police uncovered another rented house in Fatehpur Taga village, also linked to Dr. Shakil. From there, a staggering 2,563 kilograms of ammonium nitrate was recovered, material that officials say could be used to prepare multiple high-intensity explosive devices. The property owner, identified as Maulana Istaq, has been detained for questioning. In a related development, police have arrested a woman doctor from Lucknow, identified as Dr. Shaheen, for her suspected role in the same network. An AK-47 rifle was found in her car, which was reportedly being used by Dr. Shakil in Faridabad. She is the third doctor arrested in the case and has been flown to Srinagar for interrogation. टाइमर्स लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4 और इसके अलावा कुछ अन्य सामान जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन पॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन पॉप असॉल्ट राइफल। ये यहाँ पे जो है ये जो यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था, हाँ ही वॉज वर्किंग इन अल फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है, मैं आपको कहूंगा कि ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशन डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की। देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। देखिए अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूजर के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है। According to the Jammu and Kashmir police, the wider operation has so far led to 7 arrests, including professionals and clerics from Srinagar, Pulwama, Kulgam and Shopian. Investigators believe the module functioned as part of a white-collar terror ecosystem, where educated individuals were radicalized and tasked with raising funds, recruiting members, and sourcing materials under the guise of social and academic work. Police sources say the network relied on encrypted communication channels to coordinate with handlers based in Pakistan and other countries. Funds were reportedly moved through professional networks and charitable fronts. Electronic devices, documents, and incriminating materials seized during the searches are now being examined for digital forensics. Among the weapons recovered so far are 2 pistols, a Chinese Star and a Beretta, along with an AK-56 and an AK Krinkov rifle, besides thousands of live cartridges. Forensic tests are underway to trace their origins, while agencies including the NIA are expected to join the investigation to map funding and cross-border connections.
Back in Jammu and Kashmir, coordinated search operations have continued in Srinagar, Anantnag, Ganderbal and Shopian. Officials say the aim is to dismantle every link from overground facilitators to foreign handlers that support such terror networks. With explosive recoveries across states and multiple arrests of educated professionals, investigators believe they've uncovered a disturbing trend, a shift toward a more covert white-collar form of radicalization. For now, the Jammu and Kashmir police say their priority remains tracing every connection in this network to ensure such threats are neutralized before they can strike. Lindsay Menezes and Arun Naik for Goa 365.